Welcome to this lecture on inequalities using mean value theorem by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So last time we did approximation using mean value theorem, right? Yes, sir. Yes. So today we will continue on doing some applications of mean value theorem. So today we will do one of the most important applications of mean value theorem, which is to obtain some inequalities. Okay. So we will obtain some inequalities using mean value theorem. Okay. So let me just share the whiteboard with you all. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Good. We are going to do some inequalities using mean value theorems. Okay. Most probably we will be using the general mean value theorem. Okay, but in some cases we might use Rolle's theorem, or but very rarely we will use Cauchy. In fact, Cauchy mean value theorem we are not going to use today. Okay. So we are going to use mean value theorem to obtain certain inequalities. So these inequalities also help us in our this comparison tests. So all such inequalities we will be proving using mean value theorem. Okay, so let us start with the first inequality. So we are going to show that Ex is greater than equal to 1 plus x for all x in R. Okay, and with equality occurring if and only if x is equal to 0. With equality occurring if and only if x is equal to 0. Okay, so we are going to use mean value theorem on this. So how to use mean value theorem? So we need some function. So what function we should take? Fx equals to e to the power x. Yes, let fx equal to e to the power x for all x in R. So we have to prove this inequality. Okay, let a belonging to R be any arbitrary real number. So now we will have three cases. Okay, so case 1, a is equal to 0. So if a is equal to 0, then what will happen? E to the power Fx. a is equal to 0. Yes, sorry, Yes, sir. it is a to the power 0, which is equal to 1, which is equal to 1, which is equal to 1 plus 0, right? Which is equal to 1 plus a. So in this case, a is equal to 1 plus a. So equality आ गई हमारे पास. So this condition is satisfied, right? Now case 2. Yes. Case 2, when a is greater than 0. Okay. So in this case, we will apply mean value theorem on the interval 0 to a. So then f being an exponential function is continuous and differentiable everywhere on R. So in particular, क्योंकि हर जगह ही है तो in particular it will be on the set f is continuous on 0 to a, and second f is differentiable on 0 to open interval 0 to a. So what will happen? So now these two conditions are satisfied. So by mean value theorem, There exists C belongs to AB.
there exists C belonging to the open interval 0 to A such that, yes, f dash C is equal to f of A minus f of 0 upon A minus 0, right? Yes, sir. Now what is f dash C? EC is equal to e to the power A minus e to the power 0 upon A, right? तो यहाँ से हमारे Yes, पास sir. क्या फॉर्मूला है? So this implies e to the power A is equal to 1 plus A into e to the power C. Now this is positive, A is positive, okay? So if we replace this by 1, what will happen? C is lying between 0 to A. Now since C belongs to 0 is less than C less than A, so what will happen? C is greater than 0, so this implies EC is greater than e to the power 0 क्योंकि exponential function is an increasing function, right? Because its derivative is positive. So EC is greater than 1, right? So this implies AEC is greater than A because A is positive. तो अगर किसी भी inequality में positive number से multiply करोगे तो inequality will not change, right? So AEC is greater than A. So we can replace this by A. So this is greater than equal to 1 plus A. ठीक है? Is it fine? Because EC is greater than Yes. 1. So we are able to prove, and if in case 1 we are able to prove that if A is greater than 0, then we get this, right? Similarly, now we will take case 2 when A is less than 0. A less than 0 होगा तो क्या होगा? Our C will lie between, our C will be less than 0, so EC will be less than 1. ठीक है? Yes, sir. और क्योंकि अब हमारा A नेगेटिव होगा तो ये inequality will still be same because our EC is less than 1, so we are replacing it by 1, and because A is negative, so ये जो है number will still decrease, right? Same चीज करेंगे यहाँ Yes. पे next, बिल्कुल सेम कॉपी कर सकते हो केस 2, बिल्कुल सेम लाइंस पे फॉलो होगा. केस 3 A is less than 0. So अब जो है हमारा ये सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा. This interval will change. It will become A to 0 and open interval A to 0. So there will exist A to 0 and this will become, वैसे तो ये भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, f0 minus f of A upon minus A, right? So this implies, या इसको वही फॉर्म रहने दो, ठीक है, f of A minus f of 0 upon A minus 0. So this implies EC is equal to EA minus E0 upon A minus A, right? So this implies EA is equal to 1 plus AEC, and which is greater than equal to 1 plus A. Why? Since C is less than 0 implies EC is less than 1. Okay, so this up now we are multiplying it by a negative number, and when you multiply it by a negative number, inequality reverses, right? When you multiply an inequality by a negative number, the inequality reverses. So that's why we get this, right? Is it fine? Yes. Hence, in all the 3 possible cases, in fact यहाँ पे strict है दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे strict है, so it will be strict. So you can keep it strict here also, you can keep it strict here also, क्योंकि हमें equality दिखानी है कि equality hold करती है when A is equal to 0. So बस A equal to 0 वाले केस में equality आ रही है. Hence from all the three possible cases, we conclude that all the
three possible cases, we conclude that EA is greater than equal to 1 plus A for all A, या A की जगह X लिख सकते हो क्योंकि अब तो for all है. So you can write this for all X belonging to R, and equality holds if and only if X is equal to 0, क्योंकि हमारे पास 0 वाले केस में ही इक्वालिटी आई थी, बाकी सब में तो स्ट्रिक्ट है, राइट? Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Now, let us take the next question to show that minus x is less than equal to sin x is less than equal to x for all x greater than equal to 0. ठीक है, or this can be asked in other words, mod sin x is less than equal to x for all x greater than equal to 0. ठीक है, so ये दोनों inequalities, it is the same thing, right? Yes, sir. ठीक है, so ये रिजल्ट हमने कई जगह यूज भी करा हुआ है, if you remember. ठीक है, so ये रिजल्ट हमने कई जगह यूज भी करा हुआ है. Uniform continuity. Yes. और इससे एक और रिजल्ट आ जाएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होगा? If x is less than 0, then what will happen? You can take y equal to minus x, right? Then y is positive, so mod sin y is less than equal to y, right? Yes. So अब sin इसको रिप्लेस करोगे minus x से, तो less than equal to y, so this will again be sin x, right? Less than equal to Minus x. y, which is equal to mod x, right? So यहाँ से इससे फर्दर कंक्लूड कर सकते हो जो हम एक्चुअल में रिजल्ट यूज करते थे, if you remember that result. So you can also moreover further deduce that mod sin x is less than equal to mod x for all x belonging to R. ठीक है, तो कई एग्जाम में मे भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी पहले तुम्हें ये प्रूव करना होगा, फिर इस पे आओगे, मतलब पॉजिटिव के लिए पहले प्रूव करना होगा, फिर इस पे आओगे, और अदर वे अगर ये डायरेक्ट आ गया तो ये करना ही पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस. ये हमने उसमें यूज करा था, कंपैरिजन टेस्ट में भी यूज दिस रिजल्ट, राइट? हमने ये कई जगह ये इनइक्वालिटी यूज कर रखी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. सो दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम. तो क्या करना होगा? लेट अस पिक एनी x ग्रेटर देन 0. इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? If x is equal to 0, then sin 0 is 0, which is equal, है ना? तो यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, so ये ट्रिवियली होल्ड करता है. ठीक है, if x is greater than 0, then fx equal to sin x for all x belonging to R, being a trigonometric function, is continuous and differentiable on R. So in particular, f is continuous on 0 to x and f is differentiable on open interval 0 to x, right? So what will happen?
where c belongs to 0 to open interval x. इसको भी लास्ट वाले की तरह ना लेट अस डू इट इन अ लिटिल प्रॉपर वे, जैसे हमने लास्ट वाला करा था। ठीक है, इसको थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं so that लिखने में तुम्हें एग्जाम के टाइम पे you will find it easier. Okay, so let fx equal to sin x for all x belonging to R, and let a belonging to R be any real number. So case 1, a is equal to 0, then sin a is equal to sin 0, which is equal to 0, which is equal to a. So sin a is equal to a in this case. Case 2, a is greater than 0. So इसमें ये वाला पूरा आ जाएगा अपना। ठीक है, this will come okay, is continuous, so ये interval अपने change हो जाएंगे। So this will become 0 to a and 0 to a. So by mean value theorem, क्या होगा? There exists c belonging to R such that f dash c is equal to fa minus f0 upon a minus 0. Now what is f dash c? Cos Cos x. right? And this is sin a minus sin 0 is 0 which upon a. So this implies sin a is equal to a cos c. Okay, because sin 0 is 0, right? या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, it would be better to write in this form. So what does this imply? Minus 1 is less than equal to sin a by a is less than equal to 1. Why? Since Cos c cos lies between minus 1 and 1 and cos c is equal to this, so this lies between 1 and 1. So this implies अब इसको a से multiply करोगे तो because a being positive your inequality will not reverse, right? Since a is greater than 0, so you are multiplying by a positive number, so inequality will not reverse. Okay, so you get this. So hence in case 2 you are getting this inequality, right? That is sin a is less than equal to a. Now case 3, when a is negative, right? So then there exists let b equal to minus a, then b is positive. So from case 2, case 1, ये case 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? mod sin a is less than equals to mod a. Is less than equal to b. So this implies sin of minus a is less than equal to mod a, right? Mod a is equal to minus a because a is negative, right? So up now sin this will be minus sin a less than equal to mod a, that is sin a is less than equal to mod a. ठीक है, इसको भी इक्वल टू mod a कर दो, since mod a is ठीक है, बस इतने mod a लिख दो, obvious है, positive है, ठीक है. So hence from the 3 possible cases we conclude that minus x is less than equal to sin x is less than equal to x for all x greater than equal to 0, and
mod sin x is less than equal to mod x for all x belonging to R. ठीक है, is it fine? Yes, sir. ठीक है, सो ये हमने अब ये रिजल्ट प्रूव कर लिया. सो नाउ वी कैन, ये कंपैरिजन टेस्ट में हमने कई जगह यूज कर रहा है और बाकी वैसे भी एक दो जगह और यूज कर रहा है. सो दिस इनइक्वालिटी नाउ वी हैव प्रूव्ड. ओके, so mod sin x is less than equal to mod x for every x in R, और पॉजिटिव के लिए sin x is less than equal to mod x. x. Prove two inequalities. Now let us move to the third inequality, which is also called Bernoulli's inequality. Question: state and prove Bernoulli's inequality. In other words, show that for alpha greater than 0, 1 plus x to the power alpha is greater than or equal to 1 plus alpha x. Okay, for all x greater than minus 1. So x for all x greater than minus 1, and with equality if and only if x is equal to 0. With equality if and only if x is equal to 0. Is it fine? So we have to prove this inequality. 1 plus x to the power alpha is greater than or equal to 1 plus alpha x for all x greater than minus 1, and we have to show that equality holds if and only if our x is equal to 0. So this is called Bernoulli's inequality. Okay, तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों एक ही है. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो you will have to write this कि for all alpha greater than 0 this is the Bernoulli's inequality, right? So how to proceed for this? Again, क्या फंक्शन देंगे fx? One Yes. plus x power alpha. 1 plus x to the power alpha ले लेते हैं. ठीक है, फिर उसमें देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं. So let us take fx equal to, let fx equal to 1 plus x to the power alpha, and because alpha is positive तो ये क्या होगा, alpha is greater than 1. So for what values of x is this is defined? ये तो सबके लिए डिफाइंड है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे जो डेरिवेटिव आएगा वो किसके लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि ये अल्फा माइनस 1 हो जाएगा पावर, राइट? इफ यू फाइंड इट्स डेरिवेटिव देन इट विल बी अल्फा टू द पावर 1 प्लस x अल्फा माइनस 1, राइट? सो अगर x जो है वो तुम्हारा -1 से छोटा है तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा. तो अगर जैसे अगर अल्फा हाफ हुआ तुम्हारा, सॉरी अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तो ये जैसे अगर 3/2 हुआ अल्फा तो ये 1/2 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, राइट? सो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक x टू बी ग्रेटर देन, क्योंकि हमें ये दिया ही हुआ है यहाँ पे x ग्रेटर देन -1, सो ये हम डोमेन लेंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, राइट? इज इट फाइन? Yes, sir. या जैसे 3/2 भी हुआ तो ये डिफाइंड नहीं होगा अगर x जो है नेगेटिव, ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फिर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट या जैसे इवन वाली जितनी भी वो डिनोमिनेटर में होंगी पावर्स, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द डोमेन टू बी x ग्रेटर देन -1. ओके, इज इट फाइन? सो देन लेट, और वैसे भी हमें दिया ही हुआ है यहाँ पे, अगर नहीं भी डोमेन दिया होता तो तुम्हें लेना पड़ता. लेट a, अब a को भी ग्रेटर देन -1 लेना होगा. लेट a ग्रेटर देन -1 बी एनी रियल number. Now again we will have, how many cases we will have? We will have 3 cases. So what is the first case? So case 1, when a is equal to 0. ठीक है, so 1 plus
a to the power alpha क्या हो जाएगा, it will be 1 plus 0 to the power alpha which is equal to 1 to the power alpha which is equal to 1 which is equal to 1 plus alpha dot 0 which is equal to 1 plus alpha a, right? So इस केस में तो आ गया हमारे पास 1 plus a to the power alpha is equal to 1 plus alpha a whenever a is equal to 0, right? Yes. Yes, sir. Now case 2, when a is greater than 0. So now we will apply mean value theorem. So clearly f is, क्योंकि ये इसी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, so f is continuous on 0 to a and differentiable on 0 to a. So by mean value theorem क्या हो जाएगा, by mean value theorem there exists c belonging to 0 to a such that f dash c is equal to f of a minus f of 0 upon a minus 0. So this f dash c is alpha 1 plus c to the power alpha minus 1, right? And this is your 1 plus a to the power alpha minus 1 upon a. ठीक है, is it fine? Is it Yes, sir. fine? So यहाँ से Yeah. हमारे पास क्या आ गया? This implies 1 plus a to the power alpha is equal to 1 plus a alpha times 1 plus c alpha minus 1. तो अब हमें बस ये क्या प्रूव करना है, बिकॉज वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस ए अल्फा. सो इसको हमें बस ग्रेटर देन, इसको हमें क्या करना होगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्रूव करना होगा, राइट? सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव करना होगा. नाउ c is greater than 0. So what does this imply? 1 plus c is greater than 0, and this implies 1 plus c is greater than 1, and this implies 1 plus c alpha minus 1 is greater than 1 to the power alpha minus 1. Why is it so? Since alpha minus 1 is greater than 0. So कुछ भी पावर इंक्रीज करेंगे तो नंबर जो है ये 1 से, ये इससे बड़ा ही रहेगा, ठीक है? इनफैक्ट ये 1 से बड़ा रहेगा, ये बस इतना लिख सकते हैं. Is it fine? Yes, sir. क्योंकि पॉजिटिव पावर ले रहे हैं तो ये नंबर जो है बड़ा ही रहेगा. सो दिस इंप्लाइज, so using star we get 1 plus a to the power alpha is greater than 1 plus a alpha, ठीक है? सो इस केस में स्ट्रिक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, सो यहाँ पे स्ट्रिक्ट आ गया. ओके, अब थर्ड केस क्या रह गया? केस 3 when a lies between -1 and 0, right? तो क्या करेंगे, सिमिलर आ जाएगा पूरा ये. यहाँ पे तुम्हारा जो है a being नेगेटिव, ठीक है, और c जो है तुम्हारा लेस देन 0 होगा, तो 1 plus c will be less than 1, तो 1 plus c to the power alpha will be less than 1. so सेम वो जैसे हमने वो करा था बिल्कुल सेम आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सेम फॉलो होगा. या लिख सकते हो कैन बी प्रूव्ड, so it can be shown that, चलो लिखिए.
So this will be your a to 0, this will be your a to 0, a to 0, a to 0. So ये तो ऐसे लिख सकते हो इसे, क्योंकि f0 minus f या a minus 0 ये बात सेम नहीं है. So this implies 1 plus a to the power alpha is equal to 1 plus a alpha upon 1 plus c alpha minus 1. Yes. So make it double star. Now c less than 0 for c lies, oh sorry, ये यहाँ पे ये भी चेंज होगा. So c lies between a to 0, that means c is less than 0. C less than 0 means 1 plus c is less than 1, right? So this implies 1 plus c to the power alpha minus 1 is less than 1. Is it fine? Yes, sir. अब a अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. Yes, because a alpha is negative. So you are multiplying it with this, so sign will change. So using in double star, we get 1 plus a to the power alpha is greater than 1 plus a alpha. Okay. Hence, from all the three possible cases, we conclude that one plus x to the power alpha is greater than or equal to 1 plus alpha x for all x greater than minus 1 with equality if and only if x is equal to 0. क्योंकि we have seen that बाकी cases में strict आ रहा है, equality बस इसी case में आ रही है when x is equal to 0. ठीक है, is it fine? So we have proved now three inequalities. First we have proved Bernoulli's theorem, then we have proved this. So next question, another inequality that we are going to prove, show that x to the power alpha is less than or equal to alpha x plus 1 minus alpha for all x greater than or equal to 0 and where alpha lies between 0 and 1. ठीक है? So alpha lies between 0 and 1 and x is greater than or equal to 0. So we have to prove this. Further, deduce that a to the power alpha b for a greater than 0, b greater than 0, a to the power alpha, b to the power 1 minus alpha is less than or equal to alpha times a alpha times, अच्छा एक इसमें एक और कंडीशन लगा देते हैं, with equality if and only if x is equal to 1. So So अगर ये वाला पार्ट भी अगर सीधे क्वेश्चन में प्रूव करने को आ गया तो यू विल हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस. ओके, फिर इसको यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे जो अभी हम देख करने वाले हैं. ठीक है, सो ध्यान रखना इसको. अगर एग्जाम में ये डायरेक्ट भी आता है तो देन यू विल हैव टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दिस एंड देन वी हैव टू यूज दिस टू गेट दिस इनइक्वालिटी. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now let us start. So proof
solution. Okay, so let us take some solution. So which function we should take? x to the power alpha. X to the power alpha minus alpha x. ठीक है, we will take x to the power alpha minus alpha x. So इसमें थोड़ा ये ट्रिक है, ये याद रखना कि we will not take x to the power alpha, we will take x to the power alpha minus alpha x, क्योंकि फिर जब उसमें x equal to 1 पुट करोगे तो you will see that you are getting this, right? ठीक है, let fx equal to x to the power alpha minus alpha x for all x belonging to, for all x greater than equal to 0, क्योंकि हमें इस पे शो करना है. So we will take x greater than equal to 0, okay, where alpha is positive, lying between 0 and 1. ये हमें given है. Now let a greater than equal to 0 be any real number. ठीक है, so case 1 when a is equal to 0, या इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर लेंगे, दैट वुड बी मच बेटर. सो लेट अस फाइंड इट्स डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या होगा इसका, इसको अभी छोड़ दें. यस, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? f dash x is equal to alpha x alpha minus 1 minus alpha, right? So this is equal to alpha times x to the power alpha minus 1 minus 1. Yes, so what is it signed? When the number will be positive and when the number will be negative. अगर x, if x lies between 0, देखो alpha is lying between 0 and 1, so alpha minus 1 is negative, so basically this x is in the denominator, right? Yes sir. ठीक है, so ये नंबर जो है हमारा डिनोमिनेटर में है. अब अगर कोई नंबर लेस देन 1 है एंड दैट इज इन द डिनोमिनेटर, तो वो मतलब 1 by x का ये क्या होगा when this is x is lying between 0 and 1, ये किस फॉर्म का होगा? ये नंबर, ये पूरा नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? 1 से बड़ा होगा. हाँ, because x is smaller than 1, तो this number will be greater than 1 because numerator is greater than denominator इस केस में. और जब x जो है तुम्हारा 1 से बड़ा होगा तो numerator will be smaller than denominator, so this number will be smaller than 1. so हमारे पास क्या साइन आएगा? So f dash x is greater than 0 if x is 0 is less than x less than 1. Yes, and f dash x is less than 0 if x is greater than 1, right? Yes sir. So यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? The function is increasing. इसमें क्या हो गया? इसमें function is increasing. f dash x is greater than 0 if 0 is less than x less than 1, और इसमें function क्या है? It is decreasing. तो increasing का मतलब क्या है कि maximum value कहाँ पे आएगी? 1 पे. और decreasing का मतलब क्या है? maximum value कहाँ पे आएगी? Again 1 पे. So this implies fx is greater than equal to f1 for all x greater than 0 equal to 0. ठीक है? Is it fine? Yes sir. ठीक है, इसको बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो और इसको इंक्लूड कर लो. f dash is greater than equal to 0 when you can include 1. And so इस तरह से, क्योंकि हमें तो बस ये चाहिए. ठीक है, so fx is greater than equal to 1. So decreasing on 1 to 0. Oh sorry, 1 to infinity.
1 to infinity, ठीक है। या नहीं तो अभी ये पॉजिटिव इसको स्ट्रिक्टली लेने दो क्योंकि हमें इक्वालिटी भी शो करनी है ना, सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू राइट इट इन द इक्वालिटी फॉर्म। ओके, ठीक है, इज इट फाइन? So fx is greater than equal to 0 for ये हमारे पास आ गया। So this implies x to the power alpha minus 1, sorry, x to the power alpha minus alpha x is greater than equal to 1 minus alpha. और इक्वालिटी क्योंकि बाकी सब जगह तो स्ट्रिक्टली वो है हमारा, सिंस डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्ट एट ऑल अदर पॉइंट्स, तो इक्वालिटी कहाँ पे आएगी? 1 पे ही आएगी बस, ठीक है। सर डोमेन में अगेन 1 to 0 लिख दिए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मोर ओवर इक्वालिटी holds if and only if x is equal to 1, क्योंकि बाकी जगह स्ट्रिक्ट है, सो बाकी जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बस 1 पे हमारे पास वो प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी हैव सीन दैट इक्वालिटी इज देयर इफ एंड ओनली इफ x is equal to 1, ठीक है। यहीं पे कर सकते हैं, एंड fx equal to f1 if and only if x is equal to 1, so this implies moreover equality holds if and only if, ठीक है। यहाँ पे हो गया। So we have proved this part. So we have proved the first part. We have proved this part. Now how to prove this part? इसमें और इस फॉर्म में देखो क्या करना पड़ेगा हमें, x को क्या लेना होगा हमें जो ये फॉर्म आ जाए। For the second part, take x equal to a by b which is greater than 0, ठीक है। Then from first part we have a by b to the power alpha is greater than equal to alpha times a by b plus 1 minus alpha. So इसको जब मल्टीप्लाई करोगे b से, क्योंकि b is positive तो inequality will not reverse and this will become a to the power alpha b to the power 1 minus alpha, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा, right, because ये b to the power minus alpha है। This will become alpha a plus 1 minus alpha times b, multiplying throughout by b, ठीक है। सो b से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने एक्सपोनेंशियल को वो करके ये ले आएंगे। मोरओवर इक्वालिटी if and only if x equal to 1, that is a by b equal to 1, that is a equal to b, ठीक है। Equality if and only if a by b equal to 1, that is a, so, is it fine? फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ नहीं करा, बस हमने a by b ले लिया, ठीक है। सो वी गॉट दिस। Is it fine? Is this question clear to everyone? So हमने कुछ नहीं करा, we just took this, देखो हमें ये दो चीज प्रूव करनी थी। So this part can be deduced from this part by taking x equal to a by b, तो x equal to a by b लोगे तो इक्वालिटी कब आएगी? जब a by b equal to 1 हो जाएगा, so that is a equal to b, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, we started with fx, फिर हमने f dash x निकाला and we have seen that f dash x is positive if 0 is less than x less than 1 and f dash x is negative if x is greater than 1. So increasing on 0 to 1, decreasing on 1 to infinity. So this is there, and because this is strict, so fx is equal to f1 if and only if x is equal to 1, right? ठीक है? Is it okay? Yes sir. Okay. So ये सारी inequalities थी. So there are some more inequalities which you can prove using mean value theorem, ठीक है? So that we will see in the next class if we will have time.
और साथ में हम पहले नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करेंगे, फर्स्ट वी विल प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर डेरिवेटिव्स, दैट इज वी विल प्रूव डार्बॉक्स थ्योरम, ठीक है। और उसको प्रूव करने के बाद अगर इफ वी गेट टाइम देन वी विल डू वन और टू मोर इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम। सो बट ये चार इंपॉर्टेंट थी, ये चार तुम्हारे क्वेश्चन पे वो एग्जाम में आ सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस, ठीक है। बाकी देयर आर मोर इनइक्वालिटीज व्हिच यू कैन प्रूव यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, और एक्सरसाइज में तो है ही, एक्सरसाइज में बहुत सारी हैं इनइक्वालिटीज दैट यू कैन प्रूव, ठीक है। सो जस्ट गिव देम अ ट्राई, और बाकी हम करेंगे ये एक्सरसाइज को भी क्लास में डिस्कस, ठीक है। सो अभी तक इन चार में कुछ किसी को डाउट? No, sir. Okay, so then I'm ending this class, okay. So bye everyone, have a good day. Thank you, sir. Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.